So, good evening, everyone, and welcome back to my YouTube channel, Anthropology 360 Degrees, which is a complete lecture series on anthropology. Um, I know that I have been a little late in uploading the next video, that is a 1.3. So, without wasting much of your time, I think we should start with the today's lecture, that is, what are the main branches of anthropology? तो हम यूनिट 1.3 मेन ब्रांचेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले ये देखें कि फ्रांस बोआ ने हमें क्लासिफिकेशन दी थी, यानी ब्रांचेस बताई थी एंथ्रोपोलॉजी की कौन सी है मेन ब्रांचेस। तो फ्रांस बोआ ने जो ब्रांचेस दी थी वो थी सोशियो कल्चरल, बायोलॉजिकल, आर्कियोलॉजिकल एंड लिंग्विस्टिक। तो ये चार ब्रांचेस वर गिवन बाय फ्रांस बोआ। ओके, तो सबसे पहले हम ना सोशियो कल्चरल को देख लेते हैं। पर उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बता देती हूँ अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी का एंड एक्शन एंथ्रोपोलॉजी का। तो एक ना एग्जाम्पल से हम देख लेते हैं कि अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी और एक्शन एंथ्रोपोलॉजी में डिफरेंस क्या है। So when I look at applied anthropology, it is simply like when I'm making any sort of policy or planning. Yani ki I have not implemented it on the ground, it is just on the papers. So it is more or like applied. But when that policy or planning I have implemented it on the ground, यानी कि मैं उसे फील्ड पे ला रही हूँ, उसे बोलेंगे एक्शन एंथ्रोपोलॉजी. For example, I've made some sort of policies for the tribal people, and it is just on the paper. I've looked into all the scenes and scenarios which are troubling the tribal population or which are a cause of concern for them. I have looked into that and I have jotted it down on the paper, and it is in the form of policy that these are the solutions, this is this, like that. So it is a form of applied anthropology. But when those solutions I actually implemented on the ground, that is called एक्शन एंथ्रोपोलॉजी। यानी कि उस पॉलिसी पे मैंने कोई एक्शन लिया ना, तो उसे हम एक्शन एंथ्रोपोलॉजी बोलेंगे। ये बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है, बहुत बट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। आई होप इट इज क्लियर। तो फर्स्ट ब्रांच जो है सोशियो कल्चरल की, वो हम देखेंगे। ये बड़े ही क्रिस्प और शॉर्ट नोट्स है, पर मैं थोड़ा एडिशन कराते जाऊंगी, जैसे जैसे बोलते जाऊंगी आप छोटा छोटा लिखते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी है ना, वो दो वर्ड से बनी है, एक सोशल से और एक कल्चरल से। यानी कि सोशल प्लस कल्चरल gave us a new branch which is socio cultural anthropology. Okay, so let me take the social aspect of it. Social aspect लेती हूँ मैं। तो जब मैंने social aspect लिया, let me take a fresh page for you people. I took the concept of social anthropology. Okay, so definition अगर मैं देखूं इसकी क्या होगी कि सोशल एंथ्रोपोलॉजी जो है, इट इज अ सब फील्ड ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, किससे कंसर्न्ड है? कंसर्न्ड विथ स्टडी ऑफ सोसाइटीज ह्यूमन सोसाइटीज से कंसर्न्ड है, प्लस कल्चर्स से कंसर्न्ड है। आई होप ये डेफिनेशन क्लियर है। फिर से बोलती हूँ, सब फील्ड ऑफ एंथ्रोपोलॉजी which is concerned with study of human societies and cultures. Very simple. तो इसका जो फोकस एरिया है वो क्या होगा? मैं एक अगेन आप ये हब एंड स्पोक मॉडल बोलते हैं इसे, ऐसे बना सकते हैं की फोकस एरियाज। सी दिस आई एम टेलिंग यू, नो वन विल टेल यू एनीवेयर। तो आप ये फॉर्म, आपको पता है जो मेंस की आंसर राइटिंग है वो मतलब एक आंसर को डिफरेंट कैसे बनाती है अलग अब दूसरे आंसर से। आपके जो छोटे छोटे डायग्राम्स हो गए, अगर जीएस का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, जो आप ग्राफ्स वगैरह बनाते हो, वो आपके आंसर्स को अलग बनाते हो। तो हमने वही एस्पेक्ट इसमें भी लाना है। तो की फोकस एरिया आ गया पहला सोशल स्ट्रक्चर। ओके, सोशल स्ट्रक्चर में क्या आ जाएगा? जनरल एग्जांपल्स देते जाना है अपने साथ में, यानी कि इधर सोशल हायरार्कीज के बारे में बात होती है,
रूल्स के बारे में बात होगी एंड रिलेशनशिप्स के बारे में बात होगी। ओके, सेकंड आ जाएगा कल्चरल नॉर्म्स एंड रूल्स। ठीक है, ठीक है, इसमें आप लिख सकते हैं कि it is generally the investigation into the shared beliefs, values, customs and norms within the society, right? कि हमने क्या करना है कि इन्वेस्टिगेशन है शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड बिलीफ्स की। ओके, देन हम सोशल इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं। इसमें क्या आ गया आपको, यू वेरी वेल नो दैट, मैरिज आ गया, एजुकेशन, रिलीजन आ गया इसमें। ओके, देन इकोनॉमिक सिस्टम्स की बात करेंगे। इकोनॉमिक सिस्टम्स है की फोकस एरिया, जिसमें हम प्रोडक्शन की बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन की, कंजम्पशन की, स्टोरेज की। पावर एंड पॉलिटिक्स क्या है सोसाइटी में, ये फोकस एरिया रहता है। यानी कि अथॉरिटी क्या है, किस टाइप की है। अगर ट्राइबल सोसाइटी है तो वहां पे चीफ्स होते हैं, अगर बैंड के लेवल की है तो वहां क्या पावर और प्रेस्टीज है। अगर हम चीफडम के लेवल पे आते हैं, देन व्हाट इज द पावर, व्हाट इज द kind of structure in the power and politics, we look into this, and it is the social anthropology which helps us in looking into that aspect. Then we talk about social changes. Modern age is an age of globalization, is an age of migration and technological advancements. So we'll look into that, ki how all the three factors helps in changing the structure of the society. Maybe it might be in a good way or in a bad way, right? तो ये मैंने सोशल स्ट्रक्चर के बारे में आपको एड्रेस कर दिया। तो मैंने तो एक सोशियो कल्चरल है ना, नाउ विल टॉक अबाउट द कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ इट। ओके, so let us talk about cultural anthropology. अगर मैं इसको बोलूं anthropology, if I tell कि how would you define it? So subfield of anthropology, specifically addressing the study of cultures. Correct? Very simple. Again, I'll do the same thing. Key focus areas. Okay, what are the key focus areas in this? पहले हम कल्चर की डेफिनेशन देखेंगे। ये ईबी टाइलर सर ने लिखी हुई है। ईबी टाइलर सर ने हमें कल्चर की डेफिनेशन दी हुई है। ठीक है, शेयर्ड नॉलेज, बिलीफ, कस्टम, मॉरल, लैंग्वेज, आर्ट, ये ईबी टाइलर सर ने दी थी। फिर कल्चरल वेरिएशंस के बारे में, कि हमें जो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी वो कल्चरल वेरिएशंस के बारे में बताती है कि एज वी आर एडवांसिंग व्हाट आर द वेरियस वेरिएशंस दैट आर कमिंग इनटू द कल्चर। कि अगर हमारा कल्चरल एसिमिलेट कर रहा है तो क्या क्या चेंजेस आ रही हैं। कल्चरल एवोल्यूशन के बारे में बात करता है, सेम एज कल्चरल वेरिएशंस। यू नो, कल्चर इज मेनली कि हम सिंबॉलिकली कैसे एक्सप्रेस करते हैं, सिंबॉलिक सिस्टम के बारे में, यानी कि लैंग्वेज, कोई सिंबल हो गया, कोई आर्ट हो गया, वी टॉक अबाउट दैट। सो दी ये वाला जो है वो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के बारे में बता रहा है। बट मैंने आपको बोला था इट इज वी आर टॉकिंग अबाउट सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, दो चीजें हैं ना, एक एक तो पढ़ लिया। अब हम क्या करेंगे, जब दोनों एस्पेक्ट्स एंथ्रोपोलॉजी में, यानी कि सोशल एस्पेक्ट प्लस कल्चरल, यानी कि इसमें सिंबॉलिक भी आ जाएगा, जब ये हम स्टडी करते हैं दैट इज कॉल्ड सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। यानी कि यू कैन राइट लाइक दिस, एक और डायग्राम आप बनाएं इसके साथ। आई एम गिविंग यू द बेस्ट वे। सी, ये वेन डायग्राम्स बोलते हैं। इधर लिखो सोशल एंथ्रो, इधर लिखो कल्चरल एंथ्रो।
ये बीच वाला क्या आ गया आपका? सोशियो कल्चरल, यानी कि overlap of both socio and cultural. I hope so. We did the socio-cultural anthropology part. Now we'll jump on to the linguistic anthropology. As the word itself suggests, linguistic is related to language, right? So, when I get into the definition of linguistic anthropology, I may define it as it is a subfield of anthropology which investigates into the role of language. As I told you earlier, linguistic is related to language. As it investigates into the role of language, कहाँ पे? In social and cultural lives of humans, right? अगर मैं language का origin देखूं, जब हम when I trace back, origin language was not developed in the previous times. When I talk about the prehistoric times, language was not discovered. So, what acted as origin of language might be the sound of nature, because the early man were well equipped with different sounds of nature. And when they knew different sounds, they knew that how to imitate, because it is very easy for people to imitate the things, right? So imitation is easy for the people rather than discovering or inventing. So what early man did was they tried to imitate the things. Like uh, we see a child whenever we know, in early times also we know there's a cat, and what does a cat does? It mews. Nowadays also humans are very good at that imitation. When we want to address a cat to a child, we will what we'll do is that we'll try to explain the child through the sound of mew, right? So this is what happened in the previous times, and now also it continues the same. So I did the linguistic anthropology definition. So if I get into the scope, firstly, cultural context of language. I'll give you very brief ideas about it. You just expand it as per your understanding and your perception. In this cultural context of language, we'll address it by it examines how language is embedded in cultural practices, right? Secondly, language and identity, very well known. That if I talk about any tribal group, or if I specifically talk about Jammu region, so Jammu region has a language which is Dogri. So whenever I will go to a place, say Delhi, and I speak Dogri there, it will act like an identity for me. Language will act like an identity. If I'll speak Dogri, they'll immediately guess that I'm from Jammu, right? And if I'm from Kashmir, say, I speak that language in Telangana, let us suppose. People of Telangana will immediately recognize from my language that I am from Kashmir. So, what I'm trying to say that language simply acts like an identity for a person or a group or a tribe, right? Language, variation, and change. What linguistic anthropology does is that it studies the variation in language. If there is any sort of change in the language, it studies why that change has come. What are the reasons? What might be the reasons in the past? What are the reasons in the present? Is it the influence of globalization, or it is due to cultural assimilation? Might be different reasons. Okay. Language and power. It examines how language acts as a tool of power. Let us suppose there is a common man and there is a politician, right? You'll see a difference in the tones, in the pitches of both the persons, also the common man and the
politician, right? Now, what are the different methods and approaches in linguistic anthropology? Firstly is participant observation. I've in participant observation, it is a kind of field work. Like suppose there is a tribal area and I go by myself to that tribal area and study it. It is a kind of participant observation. Like I am a participant who is observing whatever is happening in that area. Then discourse analysis means if a person is saying something, then whatever they are saying, I have to analyze those things in detail. Then historical linguistic, that is studying the histories related to that language in that area. Sociolinguistic, what are the different terms that people of that area are using? Okay. Then significance क्या है सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी की? पहला, cultural understanding. It helps in understanding a particular cultural. It gives identity, acts like an identity card. Okay. Tells about different communication patterns. Helps in preservation of language. Provides education and socialization. Right? आई होप ये पॉइंट्स लिखोगे ना आराम से आपको क्वेश्चन हो जाएगा. ओके. तो यहाँ पे हम इसके बाद एक कंसेप्ट आता है सापिर वुर्फ हाइपोथेसिस का. ये हम पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में. जस्ट रिमेंबर कि सापिर वुर्फ हाइपोथेसिस जो था ये पार्ट है लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी का. स्टार्टिंग विद द थर्ड ब्रांच, that is archaeological anthropology. You can simply address in a way like archaeological anthropology is a branch of anthro which deals with study of human past in 360 degrees by using material and immaterial components. In material, it might be coins, potteries, anything which is tangible, which you can touch. And immaterial might be faith, religion, belief, which you cannot touch. We can get the knowledge of archaeological anthropology from the fossils, that is paleontology, geology, right? Fossils and dating, sole focus on human only. इनका focus जो था archaeology का, that was only humans. In this, we can use the time scales. We talk about the evolution of humans from culture, tools, paintings, potteries. Okay. What are the different subdivisions of archaeology? That is a settlement archaeology. We generally talk about the kill sites, the campsite. Kill sites are generally जहाँ पे hunting वगैरह हुई होती है. Camp sites are generally जहाँ पे residents वगैरह या कुछ time के लिए रुके हों. Experimental archaeology is generally in which we try to replicate the past behavior, right? लाइक इसकी एग्जांपल दे सकते हैं. आजकल लोग ना क्या करने लगे हैं, मिट्टी के बर्तनों में और कॉपर के बर्तन मतलब यूटेंसिल्स में पानी पीने लगे हैं. It is again an example of experimental archaeology in which the people of today's generation are trying to mimic or trying to replicate the habits of the past. Then ethnoarchaeology, it is generally the correlation between the present and past society. Zooarchaeology and archaeobotany, it is generally zoological remains like pollens for
क्लाइमेटिक रिकंस्ट्रक्शन, यानी कि अगर कोई पोलन ग्रेन है, पोलन है, वो किसी जगह से मिला हमें, हम हम पता लगा सकते हैं पहले वो प्लांट कौन सा है। सपोज हमें पाइन्स का या फर्न्स मिले हैं हमें, हम वहां पता लगा सकते हैं कि ये पाइन्स और फर्न्स जरूर उस जगह का क्लाइमेट थोड़ा कोल्ड रहा होगा, राइट, हाई ऑल्टीट्यूड होगा। दो अभी वहां वैसा एनवायरनमेंट नहीं होगा, क्लाइमेट नहीं होगा, बट वी कैन कंस्ट्रक्ट द क्लाइमेट ऑफ द पास्ट। लेट अस quickly jump onto the physical anthropology, or which we call biological anthropology. Okay, so it is the study of biological principles pertaining to human existence. हमारा एक पूरा यूनिट है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का, in which we'll study about the primates, okay, in which we'll study about DNA, cell cycles, then we'll study about Australopithecus, we'll study about Cro-Magnon, मतलब बहुत सारे प्राइमेट्स वगैरह के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। So biological anthropology, if I talk about, is a subfield of anthropology that focuses on biological and physical aspects of human beings. Here we study about human evolution, like how we evolved ourselves from hominins, like ancient humans, to what we are now. Then primatology, we study about non-human primates like chimpanzee, gorillas, okay? Then we study about human variation. We study about human adaptation. We study about forensic anthropology, in which we mainly study about DNA fingerprinting. फिर हम स्टडी करते हैं ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में यही आ जाता है हमारा सेल साइकिल्स वगैरह, ओके। देन जैसे हमने पढ़ा था पहले, बायो आर्कियोलॉजी, पैलेंटोलॉजी, सॉरी, पैलियोपैथोलॉजी, that is, we talk about investigation of diseases. Okay, then there are some practical applications of biological anthropology, like in medicine, in public health. Like if I'm an anthropologist and if I look from a doctor's perspective, it might be different from a person who is a physical anthropologist, right? We study about genetic diversity. Okay, ये जो हमारा था ये मेनली मैंने बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के बारे में बताया। सी है, वी स्टडी अबाउट प्राइमेटोलॉजी, जेनेटिक्स, एवोल्यूशन, ये पैलेंटोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी, स्टोमेटोटाइपिंग लाइक बॉडीज क्लासिफिकेशन, ये पूरा हमारा टॉपिक आएगा फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का। विल स्टडी इन डिटेल एवरीथिंग, विल स्टडी इन डिटेल डिफरेंट थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन फ्रॉम प्री डार्विनियन टू डार्विनियन, देन पोस्ट डार्विनियन, देन मॉडर्न सिंथेटिक्स theory will study. Okay, then we'll study about chromosomes, what are the different aberrations in chromosomes. So ये हमारा आज का टॉपिक काफी छोटा था, जिसमें हमने डिफरेंट ब्रांचेस की हैं एंथ्रोपोलॉजी की। Let me give you a quick recap. By Franz Boas, he classified into 4 branches: socio, biological, linguistic, archaeological. Then we talked about socio and cultural, in which we generally talk about the society and cultural aspect of anthropology. In biological, we talk about bio and physical. Linguistic is generally related to the language, and archaeological is simply the reconstruction of the past. So, I hope this is very small topic. जो हमारे अगले टॉपिक्स आएंगे ना, वहां से मेन सब मतलब शुरू होता है। नाउ आई थिंक आई शुड एंड हेयर फॉर द टुडे।
And if you have liked the video and if you have understood everything in detail, please write in the comment section that you have got what I would you simply got what I was teaching you. And if there are any sort of queries and any sort of doubts, you simply write down in the comment section. I'll read the comments and address to it as soon as possible. If you have any sort of doubts, we'll simply keep a doubt session also, in which I'll clear all your doubts. And so that's it for today. And before going, I'd like everyone to please like, share, and subscribe to my channel so that we all glow and grow together. So